बट व्हाट इफ पूरा देश का मार्केट अगर डाउन हो, तब क्या? ग्लोबल मार्केट्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। इंडिया का भी अपना एक ग्लोबल हब है, विच इज गिफ्ट सिटी। क्या है, व्हाई आर दे रनिंग बिहाइंड दिस गिफ्ट सिटी इन्वेस्टमेंट्स? $30 बिलियन इससे ज्यादा का इन्वेस्टमेंट हो चुका है। डाइवर्सिफाई। ग्लोबल म्यूचुअल फंड्स हो गया, ईटीएफ्स हो गया, डॉलर में एसेट बेस रेडी कर रहे हो। ग्लोबल मार्केट्स आर ओनली फॉर बिग प्लेयर्स, इट इज नॉट द केस, इट इज फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स ऑल्सो। सो गिफ्ट सिटी पर से इज अ नो टैक्स रिजिम, जस्ट वन क्लिक यू कैन इन्वेस्ट ग्लोबली। गूगल, Amazon, Netflix, are these your favorite apps? If yes, सोचो। अगर कोई आपको आके बोले, can you invest in these global giants? Yes guys, that's possible and we can invest this via Gift City. That's the topic for today's podcast. We're going to be discussing how a retail investor or any investor wants to invest in these global giants, we can invest via Gift City. And to decode this topic, we have Mr. Niteen, who is Director and CEO of Anand Rathi International Ventures, Gift City. Welcome to our podcast, Niteen. Thank you. I'm happy to be here. Thank you. So we'll start with the first question. आजकल हर इन्वेस्टर सुनते हैं डाइवर्सिफाई। डू यू मीन डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट इज इन ओनली इनटू इंडियन स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स? इसके अलावा डाइवर्सिफिकेशन कैसा कर सकते लोग? बिल्कुल कर सकते हैं। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। सी, इफ यू इन्वेस्ट ओनली इन वन इकोनॉमी, आप उस इकोनॉमी के पर डिपेंड हो जाते हो। But there are so many avenues right now whereby any investor, if he wants to diversify into different sectors, different economies, it is possible now, right? So, Gift City एक avenue है जहाँ पे Indian investors as well as retail investors, they can diversify in global emerging economies. ऐसे themes जो कि बिल्कुल new है, for example, blockchain हो गया, AI related sectors हो गए, इसमें diversify किया जा सकता है और बिल्कुल किया जाना चाहिए भी। So we can say now, I think the recent news says India is top 4 economy, and I think that's a good factor to consider. So other 3 economies जो India है and बाकी जो countries है, so I think this is a good opportunity for exactly. So दूसरे economies जैसे for example most of the Indian investors, they look at US to invest. So US related market का access they can have with Gift City, and so there are some other platforms also through which any Indian investor can invest into globally as well as into US stocks. So it's possible now. So people should, my recommendation to people is that they should look at diversifying their investment globally and take benefits of the emerging economies and the growing economies. Okay, thank you. सर, एक सिंपल सवाल, एक लोकल और मे बी आम इन्वेस्टर इंटरनेशनल मार्केट्स में कैसे इन्वेस्ट करेगा? See, RBI allow करता है that Indian resident can invest up to $250,000 outside India under LRS scheme. So it means that any Indian resident having a valid PAN card can remit money up to $250,000 and invest into various purposes. उसमें से एक purpose है investment into global markets. So it is allowed, right? He will have to go to his bank, transfer his funds under LRS scheme, and he can access all the global markets which are available for him. So ऐसा नहीं है कि ये जो international markets है, it's only for companies or ultra HNI clients. It's available for any Indian resident having a valid PAN card. Global markets में आप invest कर सकते हो, global mutual funds में, US stocks में, ETFs में, and across all the exchanges which are available and allowed under LRS. और सबसे इजी तरीका है गिफ्ट सिटी। यहाँ आप लोग ग्लोबली इन्वेस्ट कर सकते हो विदाउट हैवी पेपर वर्क, विदाउट एनी इशू ऑफ फाइलिंग टैक्सेशन, बिना टैक्स झंझट के आप आसानी से ग्लोबल स्टॉक्स को एक्सेस कर सकते हो, इन्वेस्ट कर सकते हो। आई थिंक जो बिना पेपर वर्क, बिना टैक्स प्रॉब्लम एंड डॉलर्स में रिटर्न्स, आई थिंक दिस इज ये आपने बहुत सही चीज बोली है। गिफ्ट सिटी रिकग्नाइजेस डॉलर्स, सो अगर किसी को यहाँ पे इन्वेस्ट करना है, इट विल ऑलवेज बी इन डॉलर्स। सो आपका पे इन डॉलर्स में, आपका पे आउट डॉलर्स में है। सो इसमें एक और फायदा ये भी होता है कि जब डॉलर अप्रिशिएट होगा उसका भी बेनिफिट इन्वेस्टर्स को मिलता है। आई थिंक डॉलर से मतलब सबको पैसा ही पैसा मिलेगा। दैट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी। यस यस। सो नितिन, कि गिफ्ट सिटी बहुत सुना है, क्या आप थोड़ा टाइम बता सकते हो कि व्हाट इज दिस गिफ्ट सिटी?
For a retail investor, what is this GIFT City and how is this beneficial? या सो अगर 2 दिन पहले आप पीएम मोदी का अगर स्पीच सुन रहे थे विच ही हैज एड्रेस टू पीपल, ही मेंशन्ड अबाउट गिफ्ट सिटी. Okay, and now he said that there are other states who are actually requesting to government to set up gift city in their states. So currently कहाँ पे? अभी गिफ्ट सिटी जो गुजरात इंटरनेशनल फिनटेक सिटी है, इट इज लोकेटेड इन गांधीनगर, गुजरात. ओके, यहाँ पे यूनिफाइड रेगुलेटर है विच इज आईएफएससी अथॉरिटी. देयर आर 3 एक्सचेंजेस लाइक आपके इंडिया में जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, एमसीएक्स है, सिमिलर सेटअप गिफ्ट सिटी में भी अवेलेबल है. यू हैव एनएसई आईएक्स which is a sister concern of National Stock Exchange. Then you have India INX, and then you have Bullion Exchange. The first Bullion Exchange, IIBX, is also there in Gift City. So regulator IFSC authority है, 3 exchanges है. There are around 17 to 18 MNC banks. There are international banking units of various Indian banks like ICICI Bank, HDFC Bank. All of them are there. Then there are ancillary service providers, insurers, etc., etc. So you name it, and the industry big guys are there in Gift City. घर बैठे आप गिफ्ट सिटी से यूएस स्टॉक्स, जैसे मैं बार बार बोल रहा हूँ, यूएस स्टॉक्स हो गया, यूएस सिटी, बिकॉज आई नो दैट पीपल आर लुकिंग एट यूएस मार्केट टू इन्वेस्ट. ग्लोबल म्यूचुअल फंड्स हो गया, ईटीएफ्स हो गया, इवन गिफ्ट निफ्टी इज नाउ अवेलेबल फॉर एनआरआईज, यू नो. So now NRIs who are investing or trading on Nifty 50 in Indian market, they can directly come to Gift City and access Gift Nifty, or अभी recently launch हुआ Sensex 30 है on India INX. So they can access this derivative products also on Gift City. सर आजकल हम लोग देख रहे हैं ट्रेड वॉर, ये डिफरेंट कंट्रीज के कॉन्फ्लिक्ट्स, काफी इंटरनेशनली प्रॉब्लम आ रहा है. This volatile market में, do you suggest, is it a good time for an investor to invest? See, investment का वक्त सही और गलत नहीं हो सकता. It's where you are investing. आज के डेट में भी अगर आप यूएस मार्केट में इन्वेस्ट करते हो, it is generating good results. I mean, in terms of returns, if you compare with the Indian markets. So I'm not saying that you shy away from Indian market and go directly to global markets. But yes, you can diversify your investment if at all this avenue is available to us. So बिल्कुल सही वक्त भी हो सकता है. There are companies like Apple, Nvidia, AMD, and all these big companies. They are available for you in which you can invest. So Indian market में जैसे करेक्शन हो रहा है, global investment आप definitely you can look at as a avenue to diversify and to invest. इसके एक और रीजन, बहुत इंपॉर्टेंट रीजन, वो ये भी है कि आप अपना डॉलर में एसेट बेस रेडी कर रहे हो. राइट. आपको हो सकता है 5 साल बाद डॉलर लगेगा, हो सकता है आपको 10 साल के बाद में अगर आपको डॉलर का रिक्वायरमेंट है, उस समय अगर डॉलर अप्रिशिएट भी हो जाता है तो उसका भी बेनिफिट आपको मिलेगा. सो वन इज दैट यू आर क्रिएटिंग एसेट बेस इन डॉलर्स. सेकेंडली, यू आर डाइवर्सिफाइंग योर इन्वेस्टमेंट इन ग्लोबली. सो ये दोनों फायदे इंडियन इन्वेस्टर्स को बिल्कुल हो सकते हैं. एंड नाउ इट इज अलाउड, यू नो, जहां पे ये सारे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है. आई डोंट वांट टू नेम देम, आई मीन ऑल दीज आर वेरी बिग प्लेटफॉर्म्स. एंड प्लस गिफ्ट सिटी इज आल्सो अवेलेबल, जहां पे ट्रेडिंग एंड डीमैट अकाउंट ओपन करके आप डायरेक्टली ये सारे शेयर्स अपने डीमैट अकाउंट में ले सकते हैं. सो देयर आर प्रोडक्ट्स अवेलेबल देयर इन गिफ्ट. सो आई थिंक फॉर एन इन्वेस्टर ये डाइवर्सिफिकेशन नॉट जस्ट इंडिया बट ग्लोबली करे आपके पोर्टफोलियो के लिए बेटर रहेगा. यस, डेफिनेटली. बड़े इन्वेस्टर्स सब गिफ्ट सिटीज आ रहे हैं. एवरीवन इज रनिंग बिहाइंड दिस गिफ्ट सिटी. क्या है, व्हाई आर दे रनिंग बिहाइंड दिस गिफ्ट सिटी इन्वेस्टमेंट्स? मैं आपको 5 बेनिफिट्स बताता हूँ गिफ्ट सिटी में इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग करने के. बट देन मैं उसके पहले आपको करेक्ट करना चाहता हूँ. इट्स नॉट बड़े इन्वेस्टर्स ओनली हु आर गोइंग टू गिफ्ट सिटी. गिफ्ट सिटी avenue is available for even normal investors also, not available only for ultra HNI or HNI clients, but it is available for people like you and me, you know. Now coming back to the benefits that it offers, सबसे पहले access to global markets in a regulated manner. Okay, it is easy, now digital also, and of course under the umbrella of IFSC. अगर मैं कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस की बात करूं, देयर इज नो एसटीटी, नो सीटीटी, नो एक्सचेंज टर्नओवर टैक्सेस जो कि आपको इंडिया में लगते हैं. गिफ्ट सिटी में ये सब कॉन्सेप्ट है नहीं.
you know. Third and very important thing is that taxation. So अगर यहाँ पे कोई भी आपका बेनिफिट होता है, प्रॉफिट जब आप बुक करते हो, तो यू डोंट, द गिफ्ट सिटी पर से is no tax regime. But whenever you take your money back in India, you are exposed to say long-term capital gain and short-term capital gain as per your income slab. The other benefit, and which is very important, is that you are creating a USD asset base with the help of Gift City. I think that's the key important. Yes, yes. इसके अलावा फॉर एनआरआईज, अगर एनआरआई को इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट करना है, they need to open their NRE account, NRO account, PIS, non-PIS, documentation, then transfer funds, convert it into INR, and then utilize this money to invest into the Indian market. And at the time of profit booking, again, they will have to convert this INR to dollars, pay the taxes there in India, and then take their monies back to wherever they are located, right? It's a very process, a long process, plus expose to taxation. But Gift City में ऐसा सब नहीं है. NRIs can very well access Indian markets to various products, AIFs and PMS, जो मैं आगे बात करूंगा. Plus Gift Nifty index derivative products भी available है without opening the various accounts that I just mentioned. So it is a simple digital documentation, onboarding भी digital है, and trading is also digital with some of the trading members. So ये सारे benefits Gift City में available है for NRIs also and also for Indian residents. I think guys this is very simple process, काफी easy लग रहा है. एक और benefit मैं बताना भूल गया, and I'm sorry for that, and which is very important. See, आप और मैं अभी गिफ्ट सिटी में फॉरेन करेंसी में अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन कर सकते हैं. ये पहले अवेलेबल नहीं था. अगर किसी को फॉरेन करेंसी में अपना अकाउंट ओपन करना पड़ता है इन इंडिया, they need to have a import export certificate, IEC certificate, okay, and this was only for the entities, not for individuals. Now the new guideline issued by RBI states that any Indian resident can open up a savings account there in Gift City. So अगर मैं वहां पर अकाउंट ओपन करूं किसी भी बैंक के साथ में, से वेरियस बैंक्स दे हैव इंटरनेशनल बैंकिंग यूनिट्स आउट देयर, इफ आई ओपन सेविंग्स अकाउंट देयर, आई कैन पार्क माय फंड्स इन डॉलर्स अंडर LRS स्कीम एंड आई कैन क्रिएट अ USD एसेट बेस. और जब मान लो मुझे कभी आगे जाके जरूरत पड़ेगी इन फ्यूचर में, आई कैन यूज दिस USD एसेट बेस टू फुलफिल माय रिक्वायरमेंट्स. It's a very big step, and RBI has taken, and now they have allowed you and me to open accounts. I think sir this international saving account is very important. Yes. But in India generally हम लोग को 4 to 6% के बीच पे एक इंटरेस्ट रेट मिलता है. Any idea with? Very good question. Very good question. अगर जहां तक मुझे पता है, banks out there in Gift City, all the major banks are present there, and their international banking units are present there. If at all you open your savings account, FCNR account there, आपको करीब 4.5 to 4.55% इंटरेस्ट आपको USD जो आपका बैलेंस है उस पर मिलता है. एक और बेनिफिट जो मुझे पता चला है वहां पर ये है कि you have the nomination facility also, and secondly the banking is also digital, and third is that on the day end balance पर भी वो आपको इंटरेस्ट देते हैं. Guys, international saving account is the game changer. I think yes. Getting savings in dollars, interest in dollars is something. Or उस savings account which is there in Gift City, the investor can invest, can use this amount which is there in his savings account, FCN account, for trading or investment in Gift City products. बहुत simple है. आपको बार-बार पैसा ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं. You can very well use your savings account there, and you can fund your trading and demat account, and you can access global markets. Simple. I think we got a fair idea. Big investors or even retail investors are investing in Gift City. Can you tell us कितना पैसा, how much money they have invested actually in Gift City till now? मैं आपको, there are so many AMCs which are there in Gift City. To quote you a figure, I think IFSC has already approved around 200 and above AMCs funds which are active there in Gift City.
And you know what is the figure that they have got in last year? For FY 24-25, the report says that they have got around $7 billion as investment into Gift City, and $30 billion is in pipeline. I think it's a huge amount. Yes, yes. There are fund houses, you name it, and the fund house is there. And all these funds are investing. There are some funds which are investing into Indian domestic markets, and there are funds, those who have strategy which invest into global markets, global emerging economies. And that is what the benefit and good differential advantage that the Gift City provides. Any NRI who wants to invest into the growth story of India can access AMCs and their funds, and the funds they invest into Indian markets. Okay. Or any Indian resident, if he wants to invest globally through funds, he can very well use various AMCs and their funds to invest into US markets, US stocks. So everything is open for both NRIs as well as your Indian residents. I think this Gift City investment in international markets is making me interest a lot. Suppose मेरे पास 1,000 रुपया है, क्या एक retail small investors with this 1,000 rupees can they invest in this international brands? बिल्कुल कर सकते हैं, और मैं तो ये बोल रहा हूँ सबसे पहले आपने दो काम करने चाहिए. एक, ट्रेडिंग एंड डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहिए गिफ्ट सिटी में. दूसरा, आपने सेविंग्स अकाउंट भी ओपन करना चाहिए और स्टार्ट बिल्डिंग योर यूएसडी एसेट बेस देयर इन गिफ्ट सिटी. नाउ कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, रिटेल इन्वेस्टर्स कितने अमाउंट से अपना वहां पे काम शुरू कर सकता है? सो डोंट वरी, एप्पल का शेयर $150 का मैं मान के चलता हूं, बट $150 बाय करने के लिए आपको एक शेयर मिलेगा एप्पल का, बट यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट बिकॉज फ्रैक्शनल इन्वेस्टमेंट is also allowed now in Gift City. I will explain you about the fractional investment, but उसके पहले मैं जो products available है retail investors के लिए उस पे मैं बात करना चाहता हूँ. So there are 3 exchanges. So I'm not talking about India International Bullion Exchange, but because वो एक अलग topic रहेगा. This bullion exchange is for jewelers and bullion dealers, so that we can cover some other time. So for retail investors, the first product is NSE IFSC receipt. जैसे मैंने NRI के लिए गिफ्ट निफ्टी बोला है, even NRIs can also invest into top 50 US stocks in the form of UDRs, unsponsored deposit receipts. The product name is NSE IFSC receipt, and it is available for NRIs as well as Indian residents. India INX का एक और प्रोडक्ट है ग्लोबल एक्सेस प्लेटफॉर्म, in which Indian residents as well as NRIs, they can access 135 exchanges across the world in 23 currencies. All US stocks, US ETFs, you name the exchange. For example, you want to trade in say DAX or say Euronext or CME or LME or NYSE. All these exchanges are also available on Global Access platform. Okay, this is the second product. Then there are various AMCs, जैसे कि मैं पहले भी बोला था, that are available there in Gift City, and they have their fund in fund structure whereby NRIs can invest into these funds under the AIF and PMS guidelines, and they can take part in the Indian equity markets through these AIFs. Plus, there are other global funds also launched there in Gift City, whereby Indian residents, if they want to invest into say US market or US ETFs, it is available. Then there are various insurance companies. For example, all the big companies, insurance company, they have global advantage funds, flexi funds and structures, जिसके थ्रू इंश्योरेंस रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो भी अवेलेबल है फॉर एनआरआईज. सो ओवरऑल आई कैन से NSE IFSC रिसिप्ट हो गया, गिफ्ट निफ्टी हो गया, सेंसेक्स 30 हो गया, ऑल दिस डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स, यूएस स्टॉक्स हो गया विच इज NSE IFSC रिसिप्ट, ग्लोबल एक्सेस प्लेटफॉर्म, इंश्योरेंस, all these products are available for retail investors, NRIs बोलो या आपके इंडियन रेसिडेंट्स बोलो. प्लस जो मैंने आपको बोला था कि आप भी अकाउंट ओपन कीजिए, and you should definitely think about it. It is available for Indian residents, and they can build their USD asset base there in Gift City. I think we got a very detailed understanding about Gift City products, the offerings, what we have. But I think the best part we liked is the fraction of investment. वो मैं आपको समझा देता हूँ. So the product NSE IFSC receipt, the exchange is NSE IX, and they have a DR ratio. Okay, so अगर Apple
का जो शेयर है अगर $200 का चल रहा है इंटरनेशनल मार्केट्स में, एंड इफ आई डोंट वांट टू इन्वेस्ट $200 इन एंड बाय वन एप्पल शेयर, बट आई हैव ओनली $20 विद मी एंड आई वांट टू बाय अ फ्रैक्शन ऑफ एप्पल, इट इज पॉसिबल नाउ. Nice. Okay, because जैसे मैंने बोला था, there are some ratios given by the exchange. So for example, मैं example दे रहा हूं, अगर एप्पल का शेयर $200 का है, and if the DR ratio is 1:25, that means 200 divided by 25 is equal to 8. So $8 में I can buy a fraction of Apple share, and this goes for the other 50 shares as well. अब आपका क्वेश्चन होगा कि मैंने अगर फ्रैक्शन लिया तो अगर कॉर्पोरेट एक्शन बेनिफिट अगर एप्पल कभी रिलीज करता है, वेदर यू आर एलिजिबल फॉर कॉर्पोरेट एक्शन बेनिफिट्स, यस, बट इन प्रोपोर्शन टू द फ्रैक्शंस दैट यू हैव इन योर डीमैट अकाउंट. I think this fraction of investment gives a good opportunity for a lot of retail investors if Yes. they want to experiment and invest in this global market with a limited funds. Yes. I think this is a very good opportunity. एक और फायदा रिटेल इन्वेस्टर्स और स्पेसिफिकली टू इंडियन रेसिडेंट्स या इन्वेस्टर्स ये है कि आपका जो मार्केट होता है, इक्विटी मार्केट, कब बंद होता है? 3:30 को. उसके बाद कमोडिटीज करेंसी फ्यूचर्स का मार्केट होता है 5, और रात तक आपका कमोडिटीज मार्केट चलता है, राइट? ये जो मार्केट है यूएस स्टॉक्स का, जो एनएसई आईएफएससी रिसिप्ट्स है, ये इवनिंग 7 o'clock से लेट नाइट 1:30 तक ये मार्केट होता है. सो वंस यू आर थ्रू विद योर इंडियन इन्वेस्टमेंट्स इन इंडियन मार्केट, यू कैन टेक रेस्ट and then you can again invest in or trade in US market in the evening. I think this is good for salaried people जो 7 o'clock तक जब घर आ जाते हैं, easily rest करके they can invest or they can understand this US market and they can invest over there. Yes, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. Thank you. I think we got a great insight. So sir, आपने गिफ्ट सिटी के बारे में बता दिया, कहाँ लोकेटेड है आपने ये बता दिया, उसके बेनिफिट्स क्या है बता दिया. Now how a retail investor can start investing here? बिल्कुल सही क्वेश्चन. आई थिंक दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन, राइट? ओके. नाउ रिटेल इन्वेस्टर्स कहाँ से स्टार्ट करें? सी, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना कि गिफ्ट सिटी इज एन इंटरनेशनल एसईजेड. सो अगर यहाँ पे किसी रिटेल इन्वेस्टर्स को काम करना है तो उनका इंडिया वाला ट्रेडिंग एंड डीमैट अकाउंट नहीं चलेगा. Okay, they will have to open a trading and demat account there in Gift City with a IFSCA approved trading member. For example, Anand Rathi या SMC या Globe, इनके साथ आप trading and demat account open करेंगे. And once the account is open, then they will have to transfer funds from their savings account under LRS to their trading account. And once this is done, they can access this market. Okay, ये फर्स्ट स्टेप हो गया. दूसरा स्टेप ये हो गया कि देयर आर वेरियस ब्रोकर्स, लाइक फॉर एग्जांपल आनंद राठी इंटरनेशनल वेंचर्स, दे प्रोवाइड क्लाइंट ऑनबोर्डिंग डिजिटल प्लेटफॉर्म कॉल्ड एज डीजी नेक्स्ट, a simple platform in which any Indian resident investor, it is available only for Indian investors, with the help of their PAN card and Aadhaar card, they can open their trading and demat account digitally with this DigiNext platform. अब आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए कि अकाउंट ओपन हो जाने के बाद में, पैसा ट्रांसफर हो जाने के बाद में ट्रेड कैसे हो सकता है? ट्रेड दो तरह से हो सकता है. एक, बाय कॉलिंग द डीलर. ओके, एंड जैसे कि मैंने आपको बताया 7 PM to 1:30 AM के बीच में मार्केट होता है. सो बाय कॉलिंग द डीलर यू कैन पुट योर ट्रेड, और यू कैन यूज डिजिटल मोबाइल ऐप लाइक AR ट्रेड, जो आनंद राठी इंटरनेशनल वेंचर्स ने गिफ्ट सिटी में लॉन्च किया हुआ है. विद द हेल्प ऑफ दिस मोबाइल ऐप, एनी इंडियन इन्वेस्टर कैन ट्रेड using this mobile app. By the way, NRIs के लिए भी AR trade app available है. With this AR trade app, the products like Gift Nifty, Sensex 30, also they can put trade with AR trade app. So digitally it's possible in Gift City. So यहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं, और जैसे मैंने आपको बोला सेविंग्स अकाउंट आप वहाँ पे ओपन कर सकते हैं. मैं एक दो चीजें और बता दूं, अगर ग्लोबल स्टॉक्स में कोई इंटरेस्टेड होगा तो एक बार अकाउंट ओपन हो जाने के बाद मैंने आपको कॉर्पोरेट टैक्स बेनिफिट्स वगैरह के बारे में बताया, टैक्सेशन मैंने आपको बताया. एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसका आप इंट्राडे ट्रेडिंग भी कर सकते हो. मान लो आपने 7 बजे अगर एप्पल स्टॉक लिया और 7:30 8 बजे आप बेचना चाहते हो तो आप बेच सकते हो. बट अगर आप सेम डे इंट्राडे आप स्टॉक नहीं बेचते हो तो द सेटलमेंट इज T+3. सो थर्ड डे में आपके जो डीमैट अकाउंट है उसमें आपका एप्पल का शेयर या एनवीडिया का शेयर या जो भी ग्लोबल स्टॉक्स जो आप लेना चाहते हो दैट विल कम. एंड व्हाट अबाउट इंट्राडे? अगर वहां पे सेम डे करते हैं तो सेटलमेंट कब होता है? सेटलमेंट आप इमीडिएटली आप
आप हमारे एप्पल बोल रहा हूँ, AR ट्रेड ऐप के थ्रू सारा आप बाय एंड सेल ऑन द सेम डे आप कर सकते हो। इसके अलावा अगर रिटेल इन्वेस्टर्स को इंटरेस्टेड है, NRIs के लिए जो दूसरे प्रोडक्ट्स है उसमें काम कर सकते हैं, AIF है, फंड स्ट्रक्चर्स है, इंश्योरेंस है, डॉलर डिनोटेड, ये सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल है। तो आप कभी भी अगर आपको इंटरेस्ट है, आप कभी भी जो ट्रेडिंग मेंबर्स है अप्रूव्ड बाय IFSC अथॉरिटी, आप उनके साथ कनेक्ट कर सकते हैं एंड यू कैन ओपन योर अकाउंट एंड स्टार्ट योर ग्लोबल इन्वेस्टमेंट जर्नी। सिंपल। आई थिंक काफी इजी प्रोसेस है फॉर अ रिटेल इन्वेस्टर, सो मे बी DIY स्टाइल आप आराम से अकाउंट ओपन कर सकते हैं एंड यू कैन स्टार्ट इन्वेस्टिंग। एक दो चीजें और जो आनंद राठी इंटरनेशनल वेंचर्स हमारी कंपनी जो किया हुआ है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, एंड इट इज इंपॉर्टेंट। वन इज दैट बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए जो फंड ट्रांसफर का जो प्रोसेस है, कन्वर्टिंग फ्रॉम INR टू डॉलर्स, इसके लिए भी हम लोगों ने कुछ मेजर बैंक्स हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, बट वंस यू विजिट आवर वेबसाइट, आनंद राठी गिफ्ट सिटी वेबसाइट पे जब आप जाते हो तो यू कैन सी दैट वी हैव डन सम टैप्स विद मेजर बैंक्स, and with their digital platform you can transfer your funds from your savings account to your trading account. That is point number one. We are also launching the consent based account opening. इसका सिंपल वे में मैं आपको मतलब बता दूं कि अगर आपका एग्जिस्टिंग अकाउंट है विद आनंद राठी ग्रुप, चाहे कमोडिटीज हो, करेंसीज हो, इक्विटी मार्केट्स में, इफ यू हैव एन एग्जिस्टिंग अकाउंट विद आनंद राठी ग्रुप, बाय साइनिंग जस्ट अ कंसेंट फॉर्म, you can digital, that too also digitally, you can open your trading and demat account smoothly, effortlessly, seamlessly in Gift City, and you can start your global investment. I think that's a great way for a retail investor to start investing here. Yes. So, sir, we got a great idea about Gift City, product benefits, and all. Next episode, next podcast, में what all things we can cover? So next podcast में एक गिफ्ट सिटी के जो प्रोडक्ट्स है इन डिटेल्स वी विल डिस्कस, सेकंड टैक्सेशन के रूल्स, एंड थर्ड सम स्ट्रैटेजीज टू इन्वेस्ट ग्लोबली। दैट्स इट। So guys, stay tuned for this upcoming very insightful details from our own Mr. Niteen. Thank you. Thank you.